Hello, friends. So, today we will discuss about transpiration and guttation because this topic is important for competitive exam like AIIMS and NEET, and we will discuss this in a conceptual way. So, what actually guttation is? Guttation means water loss in form of ड्रॉपलेट्स या डाइल्यूट सॉल्यूशन की फॉर्म में वाटर लॉस होते हैं थ्रू ओनली टिप्स ऑफ लिप ड्यू टू इंक्रीज इन रूट प्रेशर मीन्स ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑस्मोटिक पोटेंशियल आर यू गेटिंग ना ओके एक्चुअली ड्यूरिंग हाई ह्यूमिडिटी का मतलब एटमॉस्फेयर में पानी ज़्यादा होना ओके जब एटमॉस्फेयर में पानी ज़्यादा होते हैं तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन डिक्रीज होते हैं क्योंकि लिफ में भी पानी ज़्यादा है और एटमॉस्फेयर में भी पानी ज़्यादा है तो इवोपोरेशन प्रोसेस ज़्यादा नहीं होगा तो उस मोमेंट में क्या होता है लेकिन सोइल में तो पानी बहुत है तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन होते रहता है उससे कहते हैं रूट प्रेशर बढ़ जाता है तो ड्यूरिंग हाई ह्यूमिडिटी रूट प्रेशर becomes more in comparison to rate of transpiration. So now we will discuss about transpiration. Transpiration means water loss in vapor form. वेपर फॉर्म में वाटर लॉस होना दैट मीन्स इवापोरेशन ओके एंड दिस लॉस ऑफ वाटर occurs through stomata, cuticular pore and lenticel, and this water loss is due to transpirational pool. So I will explain you about transpirational pool and root pressure, how these two are interrelated, how they are like proportional. Actually the root pressure and transpirational pool, they are equally responsible for the rise of water in plants. Are you getting that? So during hot and humid weather condition, which is an ideal weather condition for performing photosynthesis process by the green plants, because perfect amount of water present होते हैं in both soil and एयर या एटमॉस्फेयर में दोनों में परफेक्ट अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होते हैं सोइल में भी एंड एटमॉस्फेयर या एयर में भी ना कम ना ज़्यादा तो क्या होता है कि सोइल में परफेक्ट अमाउंट ऑफ वाटर होते हैं सो देयरफॉर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन के वजह से रूट में ढेर सारा पानी भर जाता है उससे क्या होता है रूट सेल में प्रेशर बढ़ जाता है एंड ड्यू टू दैट प्रेशर रूट क्या करते हैं पानी को बाहर की ऊपर की तरफ पुश करते हैं आई मीन टुवर्ड्स लीफ एंड सिमिलरली ड्यू टू evaporation process water moves from leaf towards atmosphere. Are you getting? उससे क्या होता है एक प्रेशर ग्रेडियंट एस्टैब्लिश्ड होते हैं एंड उससे क्या होता है एक लाइक खिंचाव पैदा हो जाता है एंड ड्यू टू दैट ट्रांसपिरेशनल लीफ क्या करते हैं ट्रांसपिरेशनल पूल के थ्रू वाटर को अपने तरफ खींच लेते हैं ओके नाउ सो इन हॉट एंड ह्यूमिड weather condition rate of absorption
is almost equal to rate of transpiration, and therefore root pressure बढ़ने से transpirational pull भी बढ़ेंगे. Okay, they are interrelated, they are directly proportional also. So secondly, we have another case during high humidity. High humidity means एटमॉस्फेयर में ज़्यादा पानी होना, एटमॉस्फेयर में एयर में ज़्यादा पानी है, एंड एयर में ज़्यादा पानी होने से क्या होगा, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन डिक्रीज होगा, क्योंकि एयर में भी ज़्यादा पानी है और लिप में भी पानी है. सो प्रेशर ग्रेडियंट या लाइक वाटर पोटेंशियल का जो डिफरेंस है वो ज़्यादा नहीं है, तो देयरफॉर रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन डिक्रीज होगा. एंड रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन डिक्रीज होने से क्या होता है, ऑटोमेटिकली रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन या प्रेशर रूट प्रेशर इंक्रीज होंगे. तो देयरफॉर ड्यूरिंग हाई ह्यूमिडिटी रूट प्रेशर इंक्रीज होते हैं, एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ गटेशन. गटेशन कब होता है, जब रूट प्रेशर बढ़ जाता है in comparison to rate of transpiration. Now we have another case during extreme hot, like drought वाली कंडीशन में, उसमें क्या होता है कि सोइल के पास पानी ना के बराबर होते हैं, very less amount of water present in the soil body. तो उसमें वो होने से क्या होगा, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, क्योंकि सोइल के पास पानी ही नहीं है, तो एब्जॉर्प्शन वाटर की एब्जॉर्प्शन नहीं होगा. बाय रूट पानी को एब्जॉर्ब कहाँ से करेंगे, पानी नहीं है, नो वाटर इन दी सोइल. तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज very less, becomes very less, and automatically, but during extreme hot rate of transpiration, that means evaporation is taking place due to extreme hot, and due to extreme evaporation leaves becomes wilting of leaf takes place, and leaves loses the turgidity, and slowly leaves start dying in extreme hot condition, because the rate of transpiration is very greater than rate of absorption. So lastly we will discuss about this factors. We have another condition that affects the rate of transpiration. So rate of transpiration is directly proportional to wind speed, because जब wind की speed बढ़ेंगे तो rate of transpiration भी बढ़ेंगे, because wind की speed ज़्यादा होने से वाटर जो वेपर फॉर्म में जो वाटर लॉस होते हैं, तो वो स्पीड वाली विंड वो उसको लेके जाएंगे. ओके ना. सो हाई स्पीड ऑफ विंड में वेपर फॉर्म में वाटर ज़्यादा चले जाते हैं. सो टेम्परेचर, दिस factor I have already discussed just now, humidity also, and thirdly and lastly we have another factor. When CO2 level in the leaf decreases, okay, when the CO2 level in the leaf decreases, then stomata opens more in order to collect the CO2 from atmosphere. So when stomata remains open, then what happens, the rate of transpiration increases, because स्टोमाटा ओपन रहने से वाटर वेपर की लॉस थ्रू स्टोमाटा बढ़ जाएंगे. therefore rate of transpiration increases when CO2 level inside the leaf decreases. And lastly we have
we have another discussing point, that is what is the need of transpiration. ट्रांसपिरेशन क्यों चाहिए, इसका पर्पस क्या है. एक्चुअली दिस ट्रांसपिरेशन दैट मीन्स या इवोपोरेशन प्रोसेस या वाटर वेपर की फॉर्म में जो वाटर लॉस होते हैं उसका लॉस होना, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उस लॉस होने की वजह से, ट्रांसपिरेशन की वजह से क्या फ़ायदा हो रहा है. सो ड्यू टू इवोपोरेशन और ड्यू टू loss of water in form of vapor, it maintains the turgidity of plant cell. फर्स्ट ये फ़ायदा है, it maintains the shape of plant cell. Secondly, it cools down the surface of plant cell. It cools down the surface of plant cell because we know that evaporation causes cooling. So here, due to evaporation, the turgidity of plant cell is maintained and it also cools down the surface of leaf. Secondly, the rate of transpiration, it facilitates the absorption of water because as I already discussed, the rate of transpiration and this rate of absorption, they are interrelated. ये rate of absorption during hot and humid weather condition में rate of absorption होते हैं, rate of absorption बढ़ जाने से वो भी rate of transpiration भी बढ़ जाते हैं. So this rate of transpiration, it facilitates the absorption of water. And lastly, we have type of transpiration, and on this topic I will make video in coming days, but today I want to say only the basic. So depending on the transpirational site, that is stomata, cuticular pore and lenticel, transpiration are of three types: stomatal transpiration, cuticular transpiration and lenticular transpiration. So in stomatal transpiration, this transpiration, stomatal transpiration, transpiration occurs through the stomatal pore. Yeah, this is the guard cell and this is the stomatal pore. These are the guard cell, this is the stomatal pore. So in stomatal transpiration, transpiration occurs through the stomatal pore when the guard cell remain in the state of open condition. ये जब stomatal pore खुला रहता है. So stomatal transpiration occurs during the daytime, only during the daytime, and about 80 to 90% transpiration occurs through stomatal transpiration. And secondly, we have cuticular transpiration. So cuticular transpiration, it is the transpiration that occurs through the cuticular pore. Suppose this is the cuticle layer and this is the cuticular pore. Cuticular pore. So transpiration, cuticular transpiration. In cuticular transpiration, the transpiration occurs through cuticular pore, and this transpiration occurs throughout the day and night, both day and night, दोनों टाइम में होता है. And only 5 to 10% of the transpiration occurs through cuticular. And about lenticular transpiration, this transpiration occurs through dicot stem bark. Yeah, it's suppose this is a bark of dicot stem, so transpiration occurs through this spot.
only 1 to 2% transpiration occurs through lenticular transpiration, and this transpiration can occur in both day and night condition. And one more point I want to add, due to excess rate of transpiration, when excess rate of transpiration occurs, then wilting of leaf takes place. That means leaf loses the turgidity of cell. So in that case, transpiration is just like an evil process, evil phenomena. So transpiration can be a necessary evil. So thank you. With this, I end my video. Please do subscribe my channel, share it among your friends so that I get lots of motivation and creative idea to so that I can express with you. Thank you. Bye.